आप बारी बारी आइल्स दे दे के थक गए हो और आपका स्पीकिंग का जो स्कोर है, आप जो एक्सपेक्ट करते हो 758 या उससे भी ज्यादा नहीं आ रहा है, तो उसका रीजन क्या है आपको पता है? द रीजंस आर हियर, दे हैक्स टू स्कोर हाई इन स्पीकिंग। आई मीन टू से, मैं आज आपको कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं है, बट इट इज एग्जैक्टली द वे द आइल्स एग्जामिनर इज असेसिंग योर रिस्पॉन्स। वो एग्जैक्टली क्या देखते हैं आपके रिस्पॉन्स में, वो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो अगर आप भी, if you are looking to have a good band score that you say 7.5 or 8 or plus, तो कैसे आएगा? Stay tuned, keep watching your favorite YouTube channel IELTS with Deepak, और आज हम देखने वाले हैं the 5 most important hacks to score high in IELTS speaking especially. So let's check the first one, that is a speak like you are telling a story. मीन्स के आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना। सिंपल, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से भी रेफरेंस उठा लेते हैं, कोई भी बुक से, कहीं से भी आप क्या करते हैं तो रट्टा लगा लेते हैं, लाइक मगअप्स या प्री प्रिपेयर्ड या फिर मेमोराइज आइडिया है, दैट विल नॉट हेल्प यू टू गेट अ गुड बैंड स्कोर इन योर आइल्स। What you have to do is, when you are like reliving or when you are speaking in front of the examiner, you should be speaking your own experience. You should add your own emotions or your own thoughts or your own stories. Personal stories is helping more than the pre-prepared idea. मान लो कि आपको कोई टॉपिक दिया गया, डिस्क्राइब अ जर्नी दैट यू एंजॉयड लास्ट टाइम, दैट इज योर क्यू कार्ड टॉपिक, और आप उसमें शुरू कर देते हो जो हमने कभी देखा ही नहीं है कि I have visited so many locations throughout my entire life, but here in this occasion I'm going to describe about a special event or a special journey that I enjoyed with my family. It was the holiday, I have been to the Paris. अरे यार, हम कभी इंडिया से बाहर ही नहीं गए और हम चले जाते सीधा पेरिस। दी माइंड इट, आपने एग्जैक्टली एक्चुअली कहां जाके आपने एंजॉय किया है, दैट यू विल हैव टू रिवील रादर देन द फैंसी आइडियाज। बी माइंड इट, फैंसी आइडियाज विल नॉट हेल्प यू टू गेट अ गुड स्कोर, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आपने प्री प्रिपेयर्ड आइडिया दे दिया तो आपका इमोशन जो है वो एग्जामिनर समझ नहीं पाते हैं और आपका स्कोर कहीं ना कहीं 5.5 या 6 पे आके रुक जाता है। सो फर्स्ट suggestion that I am saying is, you will have to speak like you are telling a natural story. It is not just a story, but you will have to speak about your own personal story. So जब भी आप प्रिपेयर करो, खुद की स्टोरी डालिए। अगर नहीं डाली, स्कोर नहीं आएगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका स्कोर नहीं आने वाला। So that was the first. Now move to the second. Master the PPF technique. Okay, what is PPF? As I have been instructing number of students always that IELTS examiners are checking your responses in terms of various parameters, and among them one of the parameter is your grammatical range and accuracy, and grammatical range can be maintained with the help of the PPF structure, that means the past, present and the future. आप कोई भी स्टोरी बनाओ या आपका कोई भी आंसर है, उसे थोड़ा बहुत पास्ट में, थोड़ा बहुत उसे प्रेजेंट के साथ कनेक्ट कीजिए और फ्यूचर में ले जाए। सो फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा उससे? फर्स्ट बेनिफिट इज दैट यू विल हैव रेंज ऑफ टेंसेस, द ग्रामर की जो रेंज चाहिए वो आएगी। और दूसरा, when you align, when you combine or when you connect the past, present and future, it will automatically maintain the cohesion and coherence, स्पेशली द कोहेरेंस, क्योंकि पास्ट की स्टोरी है, उसके साथ आपने प्रेजेंट को कनेक्ट किया और फ्यूचर में भी कनेक्ट कर रहे हो, तो कनेक्शन क्लियरली दिखेगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रैब द गुड स्कोर ऑफ योर CNC, कोहेजन एंड कोहेरेंस एज वेल। तो यू विल हैव टू मेंटेन द PPF टेक्निक और स्ट्रेटेजी। आपको ये क्या है पता नहीं है तो मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं, आप मेरी चैनल में देख सकते हो, दैट हाउ टू मेंटेन द PPF स्ट्रेचेज। देन लेट्स मूव टू द थर्ड वन, इज यूज नेचुरल फिलर्स एंड द कनेक्टर्स। ओके, यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि यू विल हैव टू मेंटेन द कोहेरेंस। कोहेरेंस मेंटेन हो जाता है, दैट कैन नॉट बी, लाइक कोहेरेंस इज व्हाट, इट इज नॉट अ kind of a presentation which can be maintained or which can be balanced by providing some words. ये कोई वर्ड नहीं है, coherence is an emotion.
मान लो कि आप कहीं एक स्टोरी बना रहे हो ट्रैवलिंग का, coherence क्या है, that I am giving you a clear like explanation is that let me give you in Hindi that आप कहीं घूमने जा रहे हो सुबह, तो क्या है कि जो आपकी एक्शन है, सुबह उठे, फ्रेश हुए, आपने ब्रेकफास्ट किया, यू गेट रेडी, आपने कार ली, यू स्टार्टेड ड्राइविंग, ऑन द हाफ वे आपको कहीं भूख लगी, आपने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, देन यू रिच टू योर डेस्टिनेशन, वहां पहुंचे, फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, फिर खाना खाया। तो दैट इज द सीक्वेंस। आप जब सीक्वेंस मेंटेन करते हो दैट इज योर कोहेरेंस। और अगर बीच में आपने कहीं ऐसे बोल दिया कि like I woke up early in morning, reached to my favorite destination, hill station, and reaching there, I had my food, and while going to the way, I enjoyed some food at the finest restaurant by roadside. तो क्या कि आप पहले लोकेशन में पहुंच गए, फिर वापस से, ऐसे नहीं, यू विल हैव टू मेंटेन दी कंप्लीट कोहेरेंस। तो कोहेरेंस तो हो जाता है, लेकिन फिलर्स इज व्हाट, फिलर्स आर दैट हेल्प यू टू स्टार्ट योर स्पीकिंग। ओके, सपोज एग्जामिनर ने आपको पूछ लिया कि डू यू लाइक वाचिंग मूवीज, यस आई लाइक वाचिंग मूवीज, नहीं, obviously you should be adding your personal emotions. What are the fillers are what they are your personal emotions, like obviously, certainly, of course, why not, those are the words. but there are number of fillers, नीचे कमेंट में डाल दीजिए कि fillers, तो मैं आपको नंबर ऑफ या लिस्ट ऑफ fillers विद एग्जांपल की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कौन कौन से फिलर से कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं उसके रिलेटेड एक वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। So need fillers as well as the connectors. Why connectors? So connectors are like words which helps the listener, means के एग्जामिनर को पता चलेगा आप कौन कौन से एक्वेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते गए, या फिर आपकी स्टोरी कैसे अलाइन हो रही है उसे पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे लाइक दी कनेक्टर्स और द लिंकर्स कैसे इस्तेमाल होंगे, कैसे हो सकते हैं कि मान लो like I wake up early in the morning and I got fresh and then I did my breakfast and started driving my car. Not that way. You should be starting in that way. Well, it was the most memorable day for my entire life. First of all, as soon as I woke up early in the morning, the first thing which I did my breakfast. So first thing, once I finished my breakfast, I started looking for my car keys and started driving towards to the my favorite destination, which was the Saputara hill station. तो क्या है कि या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, first I did something, secondly, additionally, furthermore, moreover, those are the linkers. आपको ऐसे linkers या connectors use करने हैं. So always remember, start your answer with your personal emotional feelers. Gradually, of course, why not? Certainly, who not? I believe in that way. It's my personal point of view. तो ऐसे बहुत सारे फीलर्स है, उनसे आपका आंसर शुरू कीजिए। और जब भी आप आंसर में लाइक नाउन्स यूज कर सकते हो, when you are using number of nouns, तो nouns को आप start counting first, second and third. Like what's your favorite pastime activity? Like to get out of my boredom, I enjoy various activities. First of all, I play cricket. Sometimes I enjoy playing video game as well as I go on jogging. So first, second and third. ऐसे आपको यहाँ पे क्या है कि connectors, और I would say you should be using the fillers that sounds natural. जो आपका आंसर है एग्जामिनर को पता चलेगा, he will find it natural. आपका जो बॉडी टोन है, आपका बॉडी जेस्चर है, आपकी हैंड मूवमेंट है, योर ऑल ओवर फेशियल एक्सप्रेशन है, that would be natural and examiner would accept your answer as your own personal natural response and you'll get a high grade score. So that is important. Next one is boost your vocabularies with some collocations and idioms. Okay, so before moving collocation and idiom, let's check the vocabulary part. What sort of the vocabulary exact IELTS is looking for in terms of writing and speaking? कैसी चाहिए? First, fancy vocabulary or fancy ideas will not help you to get a good score, or I would say you will get only average score with the help of fancy vocabulary. So avoid using fancy vocabulary. Rather than you should be using the topic related vocabularies. मान लो कि you are talking about technology.
तो आपकी वोकेबलरी क्या क्या होगी? When you are discussing about a technology, it can be the computer, it can be the laptop, it can be the innovation, it can be the software, it can be the front end, back end, cyber security, the malware, the virus, the threat. Those are the words related to technology. When you are discussing about an education, so when it comes to education, there are certain words related to education that can be the education, the period, the professor, the teacher, the chapter, the assignment, the project, the examination, the viva, submission, pass, fail. Those are the words which are exactly describing the situation or your subject. So always use the vocabulary on your topic, and IELTS is looking apart from topic related vocabulary. They are looking for the various kind of nouns, the verbs, the adverbs, the adjectives, the participles, and the gerunds. Those sort of variety of vocabulary exactly IELTS is demanding, not the fancy. Additionally, you should be using some collocations. Collocations in this sense, some simple sentences or a kind of a group of words or sentences, clauses and phrases. कौन से है? बहुत लंबा लिस्ट है. If you want, I will pass it to you. And you should be using the idioms as well. Idiomatic language. मान लो कि आप कहीं जा रहे हो and आप कहीं पहुंचे and बहुत खुश है. So like when I reached to my favorite destination, the Saputara hill station, I was feeling very happy, very happy. Exactly आपकी situation क्या है, emotion क्या है, आप नहीं disclose कर पाए. So rather using very happy, I would say use over cloud nine idiom. Okay, learn some idiom, expressive idioms. Okay, when you are feeling extremely happy, you should be saying, when I reached to my favorite destination, which was none other than the Saputara hill station, and I was feeling over cloud nine. हो गया idiomatic expressions. Then मान लो कि आप कहीं पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो. Okay, like I burn my midnight oil. It is like to clear my IELTS examination, I worked tremendously hard or extremely hard to crack my IELTS. So you should be saying, to crack my IELTS, I burn midnight oil. Okay, or to clear IELTS with high band score, I burn midnight oil. People should be burning midnight oil to achieve their targets or goal in their life. Okay, or when you are stuck in some situation, undecided situation, so at crossroad. Okay, when I cleared my 12th examination, I was facing critical issues, or I was in a dilemma whether to go for science or commerce. So when I cleared my 12th examination, I was at crossroad whether to go for science or commerce stream. So those idiomatic language will add additional, I would say, normal words are there, topic related vocabularies are there, but idiomatic language is, or idiomatic words, some idioms, what are they? They are the ornamental words जो it helps to beautify your language. आपकी जो language है, the presentation you are doing, उसमें ज्यादा additional emotion add होगे, and that can trigger the IELTS examiner. Trigger in the sense he will be impressed. याद रखिए, idioms 3, 4 और 5 would be maximum. फिर ऐसा नहीं है कि चलो idiomatic language बोले, so let's start with number of idioms. Every answer में चाहे part 1, 2 या 3 है, 15, 20 पेज डाल दे. Not that way. We need to use idioms specifically related to your ideas, your lines, clauses and phrases. आपके according situation के according ही आप idioms इस्तेमाल करेंगे. And the last one is train your intonation, not just word. As I told you, okay, idioms, collocations, some clauses, some phrases will help you to get a good score. But when you are representing that, then you need to have an intonation. What is intonation? Let me be clear that when you are speaking, focus on your flow of the words and the sound. How? When you have a certain like kind of the let's take an example of like, do you like watching movies? Yes, I like watching movies, and whenever I watch movie, I always feel over cloud nine. What's that? It is a flat tone, and flat tone will not help you get a good score, because सामने वालों को ये लगेगा कि बंदा घर से रट्टा लगा के आया है, मैंने वही क्वेश्चन पूछा जो उसे आता है और क्लियर हो गया. So you will not get a good score.
when you get a certain question, so you should be speaking like आपकी speech जो है sometime make it higher, sometime make it slower. Sound in terms of कभी sound high ले जाए, थोड़ा lower कीजिए, थोड़ा speed बढ़ाइए, sometime reduce the speed. ठीक है, pauses आपको pauses लेने हैं. Without pauses you are creating so many mass. I would say too much mass. Giving you an example, simple. Last it grandpa, and दूसरा सेंटेंस है let's eat and comma grandpa. दो सेंटेंस है, सिंपल है, इंपेरेटिव सेंटेंस है. ओके, लाइक let's eat grandpa. हम यहाँ पे पोज या कॉमा नहीं लेते, स्टेट चले जाते हैं. let's eat grandpa मीन्स के मतलब क्या होगा, चलो दादाजी को खाते हैं. और जब हम पोज लेते हैं let's eat grandpa, चलो दादाजी हम खाना खाते हैं. So that is an important. So pauses, some intonations, flow of your speech, tone of your speech, आप उसको improve कीजिए. कैसे करेंगे? The ways are that is a shadowing technique. Shadowing techniques what? आप बहुत सारे जो natural speakers है उसे सुनिए, उसे समझिए and speak in front of the mirror every day at least 5 minutes. तो आपका जो tone है वो improve होगा. Second, that you can do is record yourself. आप जब भी आपका मान लो कि प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हो, आपके मोबाइल में उसे रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए. then you will find the exact difference in terms of natural and artificial or robotic presentation. एक वीक कीजिए, आई एम श्योर आपको इम्प्रूवमेंट आएगी और आएगी. सो रिकॉर्डिंग एंड शेडोइंग टेक्निक एंड मिरर टेक्निक विल हेल्प यू अ लॉट टू वर्क ऑन योर इंटोनेशन. ओके, यहाँ पे क्या है कि जस्ट मैंने बोला कि idioms आर रिक्वायर्ड. तो आप जब भी बोलते हो कि आई वाज एट क्रॉस रोड, सो आपके फेस में वो एक्सप्रेशन आनी चाहिए कि व्हेन आई क्लियर माय 12th आई वाज एक्चुअली ऑन अ क्रॉस रोड दैट वेदर टू सिलेक्ट कॉमर्स और साइंस. फिर अगर आपने ऐसे बोल दिया कि व्हेन आई क्लियर माय 12th एग्जामिनेशन आई वाज एट क्रॉस रोड वेदर टू सिलेक्ट आर्ट्स और कॉमर्स, फ्लैट टोन एक्सप्रेशन नहीं है, स्कोर नहीं आएगा. पक्का 5.5-6 पे ही आप अटकोगे. सब भी सही होगा फिर भी यू विल हैव जस्ट 5.5 or 6. So for that reason I would advise you will have to work on your intonation. Do not keep adding the fancy vocabulary always. You should be adding some kind of emotional words, and when you are using those words you should be you should be reflecting emotionally. Like when I reached to the Saputara, when I saw the tremendous greenery, the trees, lush in gardens and everything, I was feeling really I was feeling over cloud 9. Your face should be showing some happy expressions. Don't say, when I reached to the Saputara and after watching all the gardens, the greeneries and people roaming around and there, I was feeling over cloud 9. ये स्कोर ही नहीं आएगा पक्का. So you should be working on your intonation. So those are the 5 tips, techniques, I would say the master strategy, or I would say the most important topics you should be focusing when you are preparing for your IELTS. So first one, as I said, you have to prepare your own story. Whenever you are talking, you should have your own natural story, your own natural ideas. Then master the PPF technique. That means you will have to focus on past, present and future, range of grammar with accuracy, and use natural fillers and connectors, kind of linkers, your fillers like let me explain, let me be in references and so on. So there are number of fillers. Then boost vocabulary with collocation and idioms, kind of like idiomatic languages, some clauses, some phrases and kind of some collocations. And then last one is train your intonation, not just words. So focus on the tone of your speech. Do not just speak in a flat tone or robotic tone. Okay, you will have to speak like you are human. Do not disclose your ideas just kind of like normal robot. You will have to speak exactly. So if you keep in mind those 5 topics, I guarantee you will have score improvement, a better improvement. Agar aapka previously you have just like you received just 5.5 somewhere or 6, guarantee if you focused it, you will have somewhere 7.5 to 8.5 guarantee. And rest, if you are looking for perfect 9, what are the strategies? Keep watching my videos as well as I
you can comment me and you can share me your responses. I will assess your performance for writing and speaking both, because I am giving a service for that as well. So if you're looking for a genuine assessment of your writing and speaking performance, do connect with me or directly message me on below comment box. I'll get back to you. Thank you so much for watching your favorite YouTube channel IELTS with Dipak, and let's meet you in next video where I will be reliving some secret strategies for you to score a good or high or a perfect band score 9.